Hello 10th standard, this is your next part or next half of 100 dresses part 1. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, how many this and that, she was bothering her. So Maddie, she was not feeling comfortable with all this mockery and teasing with do with Wanda Petronsky. Maddie was poor herself. Why? What was the reason? Because Maddie, she was poor herself. She usually wore somebody's hand me down clothes. Hand me down means worn out clothes. जब आपके used clothes होते हैं आप किसी और को दे देते हो तो वो hand me down clothes हो जाते हैं. So usually wore somebody's worn clothes. Thank goodness she didn't live up in Bogan Heights or have a funny name. तो थैंक करती है कि वो जो है वांडा की तरह बॉगिन हाइट्स एक सबर्ब एरिया में नहीं रहती और ना ही उसका फनी नेम है जैसा कि वांडा का है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, जब भी पैगी जो है she tried to mock Wanda in a courteous manner, Maddie जो है she felt very ashamed, embarrassed, and she did nothing but to try to keep herself busy with the marbles which she was holding in her hands. तो अपने आप को बिजी रखती है कंचों के साथ जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी होती हैं. नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा. एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. ऐसा नहीं है कि वो वांडा के लिए सॉरी नहीं थी. एग्जैक्ट और रियलिटी ये क्या है कि वो वांडा की तरफ शायद कभी ध्यान ही ना देती अगर पैगी जो ये ड्रेस गेम इन्वेंट ही ना करती. But suppose Peggy and all the others started in on her necks. Now she imagined कि what happened if Peggy and other girls they started targeting her and started making fun of her instead of Wanda. She wasn't poor as Wanda. वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी Wanda है. Perhaps, but she was poor. लेकिन वो poor थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. And she said that she is more sensible than Wanda Petronsky. She would never just say, she would never tell a lie to Peggy and other girls by saying this कि she had 100 dresses. Still, she wouldn't like for them to begin in her. And that's why she never give them a chance to make fun of her, like Wanda. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. वो wish करती है कि Peggy अपने आप ही Wanda का मजाक करना बंद कर दे. Today, even though they had been late to school, आज भी वो late थे. Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. और मैडी जो थी वो बहुत खुश थी कि उन्हें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली. तो उसने शी वॉज बिजी इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. 8 × 8 लेट्स सी. शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. शी विश्ड कि काश उसके पास नर्व करेज होता कि वो मैगी को एक नोट लिख के देती उसकी ये गेम के बारे में. बिकॉज शी न्यू दैट शी wouldn't have courage to say something directly to Peggy regarding this teasing. So she was imagining, she was thinking, hey Peg, कि वो उसको कह सके, let's stop asking Wanda how many dresses she has. कि बंद करो ये गेम कि उससे पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है. When she finished her arithmetic, जब उसने अपना मैथ्स कंप्लीट कर लिया, she did start a note to Peggy. She started writing a note to Peggy. Suddenly she paused, लेकिन वो रुक गई and shuddered. Shuddered means nervous हो जाना, कांपने लग जाना. Shaking due to nervousness. She pictured herself in the schoolyard because she imagined herself as she standing in the schoolyard and a new target for Peggy and girls. And बाकी girls और Peggy जो है now she's they are targeting her. And Peggy जो है she might ask her about her dress. She got the dress she had on. कहाँ से लिए ये dress? And Maddie would have to say और Maddie उसको आंसर दे रही है कि it is या it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise. का मतलब change the form with न्यू ट्रिमिंग्स. और मैडी उसको क्या आंसर दे रही है कि उसी की एक पहनी पुरानी ड्रेस है जिसे उसकी मदर ने लेसेस रिबन्स लगा के चेंज कर दिया है ताकि रूम नंबर 13 में कोई रिकग्नाइज ना कर सके. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्डिंग टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. सो मैडी अगेन विश्ड कि काश अलास पैगी जो है she would herself decide to stop making fun of Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair. Blonde guys yellow golden color के होते हैं जब highlight करते हैं बालों को और short hair है उसके. तो she started due to nervousness. Maddie she was playing with her hair as though the push uncomfortable thought way because she wanted to uh, throw all these thoughts away. She wanted to feel cool and calm. That's why she wanted to attract her mind towards some other thing.
other thinking or other thought. What difference did it make? Slowly, Matt tore into bits, and whatever she was trying to write a note to Peggy, so she tore it apart. She tore this paper into pieces. Uh, she was because she was Peggy's best friend, and Peggy was the best like girl in the whole room, or you can say the whole school. She was the most liked girl, guys. All the students they like. She was a very popular girl. All the students they liked Peggy very much. Peggy couldn't possibly do anything. She was really wrong, she thought. And Maddie, she thought finally ki Peggy, she definitely wouldn't like to do anything which would not favor, which would not be favorable in her या टूवर्ड्स हर. सो पेगी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो कि उसकी फेवर में नहीं होगा. एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल, एंड नाउ शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वांडा कि वांडा जो है शी इज़ जस्ट एन ऑर्डनरी गर्ल हु बिलोंग टू बॉगिन हाइट्स एंड who has no friend. She just stood alone in schoolyard, means without any friend. She scarcely ever said anything to anybody. She is very introvert. She hardly uttered any word. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. The only talk other girls जो है through which with which they acquainted that Wanda जो है she talked only about 100 dresses. कि Wanda जो है she opened her mouth only to tell about 100 dresses. Otherwise she never talked to any other girl. Maddie remembered her telling about one of her dresses. Now Maddie she is recalling, वो याद कर रही है about one of her dresses कि Wanda जब अपनी dresses के बारे में बताती है उनमें से कुछ उसको जो याद आ रहा है कि once Wanda she was trying to tell one of her dresses 100 dresses pale blue कि उनमें से एक ड्रेस pale blue कलर की थी और उसके ऊपर कलर ट्रिमिंग्स थी. ट्रिमिंग्स का मतलब होता है गाइस रिबन्स, आपको बता दिए लेसेस वगैरह. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और दूसरी ड्रेस जो कि डार्क जंगल ग्रीन कलर की थी, उसके ऊपर एक रेड सैश था. सैश गाइस जैसे कि मिस इंडिया और ये सब जब टाइटल विन करती हैं तो उनके शोल्डर में एक सैश पहनाया जाता है, ये वेस्ट के ऊपर भी. सॉरी. You would like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended का मतलब होता है शो ऑफ. सो बाकी सारी गर्ल्स जो होती हैं जब उस वांडा का मजाक उड़ाती हैं, जब वो अपनी ड्रेस के बारे में बताती हैं, तो प्रिटेंडेड का मतलब शो ऑफ, दिखाती हैं वैसे कि वो वांडा की प्रेस कर रही हैं, लेकिन दे वर मेकिंग फन, दे वर टीजिंग कि तुम उस ड्रेस में तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगती होगी. वो ग्रीन ड्रेस के बारे में दे आर पॉइंटिंग आउट. Thinking about Wanda and 100 dresses all lined up in closet, Maddie began to wonder why was. So when she was thinking about Wanda, about her dresses, so suddenly she started thinking about a drawing and coloring contest. एक और उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है कि वो जो कंपटीशन उनके स्कूल में हुआ था वो कौन जीतेगा, उसका विनर कौन होगा. फॉर गर्ल्स द कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. बॉयज़ के लिए जो था ये कंपटीशन क्या था, मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना, और गर्ल्स के लिए था ड्रेसेस को डिज़ाइन करना. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स medal. तो शी थॉट कि डेफिनेटली पैगी वुड विन दिस मेडल बिकॉज शी वॉज अडेप्ट एट पेंटिंग. उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, सब जानते थे कि वो पेंटिंग अच्छी करती है. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन. किसी भी मैगजीन में कोई भी कुछ भी ड्रॉ होता वो उसको कॉपी कर लेती थी. किसी भी फिल्म स्टार का पोर्ट्रेट बना लेती थी ताकि आप जज कर सकें कि वो कौन सा फिल्म स्टार है. और मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. दैट्स वाई शी वॉज श्योर कि पैगी वुड डेफिनेटली विन. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, दे वुड नो. So she thought कि Miss Mason, their class in charge, when the very next day she would announce and only they would come to know about the winner. The next day it was pouring very lightly, drizzling. Maddie and Peggy, they were hurried, they were rushed to school and they were using Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't want for Wanda Petrosky, and that day जो है, they were not thinking about Wanda on the corner of Oliver Street. तो usually जो है they girls और Peggy and Maddie they waited on the same street. Because this street जो है far under the railroad track and up to the hill and led to Bogan Heights. Because this was the route of Wanda Petronsky. Through this route जो है she usually came to school. So that's why these two girls जो है they oftenly जो है waited in the Oliver Street, on the corner of Oliver Street. Anyway, they were not taking chances on being late today, and that day जो है they were not in mood of taking any chance to become late school because that day was very important. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy.
तो पैगी जो है शी इज आस्किंग कि डू यू थिंक कि आर इन चार्ट शी विल टेल द winners name of winners. Oh, I hope so. The minute we get in, Maddie said ki whenever we will enter in the class, she will tell ki Peggy, you are the winner. Hope so. Peggy eagerly, very curiously she said ki hope so ki I would win. The minute they entered the classroom, so when they entered the classroom, they stopped short and gasped guys, due to surprise, breathless expression जब आपका मुंह खुला रह जाता है, या sometimes you try to swallow saliva जब आपके सरप्राइज एक्सप्रेशन होते हैं. सो दे स्टॉप्ड एंड वेरी सरप्राइज्ड and there were drawing all over the room. The whole room was adorned with paintings on every shelf, ledge means and window shelf. window का base जो होता है guys, dazzling brilliant colors, बहुत ही dark और bright colors, and very grand designs, lavish designs, exclusive designs, all drawn on great sheets of wrapping paper, and all the paintings were drawn on beautiful wrapping paper. There must have been 100, and definitely these were of 100, all lined up, all were displaying in a sequence. These must be the drawings for the contest. So both the girls they thought कि definitely these drawings जो है are for the contest. They were, और ये थी भी. Everybody stopped. सबके सब वहीं रुक गए. They started whistling. They started whispering due to a praise, admire. As soon as the class had assembled, तो जैसे ही क्लास असेंबल्ड होती है, मिस मेजन अनाउंस द विनर्स. तो बॉयज़ में जैक बेगीज ही हैड वन. शी सेड दैट हिज डिज़ाइन जो है आउटबोट मोटर का, वो एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में डिस्प्ले किया गया, जहाँ पे भी बाकी बच्चों के, बाकी बॉयज़ के डिज़ाइन जो है वो डिस्प्ले किए गए हैं. एंड फॉर द गर्ल ही शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो है they submitted just 1 or 2 sketches of dresses, but one girl, and you should feel proud because she belonged to room number 13, and that girl actually drew 100 designs. उसने 100 designs draw किए और submitted किए. All are different, all are very beautiful, and according to judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. कि if you pick any drawings of out of these 100, तो इट इज़ वर्थ ऑफ विनिंग प्राइज़. की उसकी कोई भी पेंटिंग उठा लो, वो सबकी सब इतनी सुंदर है कि सबकी सब जो है वो प्राइज़ को क्लेम कर सकती हैं. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल. एंड फाइनली शी अनाउंस्ड वांडा शी वॉज द विनर among girls. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. Wanda जो थी वो absent चल रही थी, is not here to receive the applause, praise that is due to her. तो वो वहाँ नहीं थी जो वो प्रेज उसके लिए हो रही थी. Let us hope she will be back tomorrow. उसकी इंचार्ज कहती है कि शायद वो कल तक आ जाए. Now class, you may file around. You can take a round of the room quietly and look at her exquisite drawings. So guys, exquisite meaning दिया हुआ है आपकी बुक में extremely beautiful and well made. तो आप इससे भी सुंदर पेंटिंग है, उसको आप देखो. The children burst into applause. Applause suddenly जो है you start clapping. सो बॉयज़ जो कि नहीं इंटरेस्टेड थे ड्रेसेस में, लेकिन जब मैं मिस मिजन ने अनाउंस किया तो दे स्टार्टेड क्लैपिंग, विस्लिंग, स्टैम्पिंग, थम्पिंग देयर फीट ऑन द फ्लोर एंड दे क्रिएटिंग अ नॉइज. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग नॉइज. Look back, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't she beautiful? So Maddie जो है she tried to capture, she tried to draw the attention of Peggy towards blue dress जो कि वांडा ने जो है डिस्क्राइब की थी कि देखो ये वही वाली ब्लू ड्रेस है, कितनी सुंदर है. और पैगी ने भी कहा देखो ये वो जंगल ग्रीन, डार्क ग्रीन वाली ड्रेस है और मैं चाहती थी कि मैं ऐसी ड्रा करूँ और ये वही ड्रेस है. सो बोथ द गर्ल्स जो है दे स्टार्टेड एडमायरिंग द पेंटिंग्स ऑफ वांडा. सो गाइस नाउ यू कम टू नो कि एग्जैक्टली जो है वांडा शी डिडंट हैव 100 ड्रेसेस बट शी हैड 100 पेंटिंग्स ऑफ ब्यूटिफुल ड्रेसेस. एंड ये सब पेंटिंग्स जो उसने खुद ड्रॉ की थी और सबकी सब लाइंड अप थी उसके क्लोजेट में, तो वो इसके बारे में जो है बात करती थी. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ 100 ड्रेसेस एंड सेकेंड पार्ट गाइस मैं आपको बाद में भेजूँगी. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी आल्सो ताकि आप इसको साथ के साथ समझो गाइस. दोबारा ये चैप्टर जो है रिकॉल नहीं होंगे. रिकॉल का मतलब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप इसको घर में बैठ के अच्छे से स्टडी करो. थैंक यू.